Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are here with a new topic, that is ribs pain. So rib is the most important part of our body. It protects our lungs, our heart. So it plays a very vital role in our day-to-day life. So most of the people have a rib pain and they actually don't know, उनको पता भी नहीं होता कि उनको rib pain है. They are confused with it with a back pain. Okay, so now I'll tell you how you will get to know that you have a rib pain. So कुछ ऐसे symptoms हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको rib pain है. जब भी आप breathe in, breathe out करते हो, सांस लेते हो, तो आपको एक burning sensation होता है. So उससे you can get an idea that you have a rib pain. जब आपका जो back है, middle back, उसमें आपको पेन हो रहा है एंड यू कांट रीच आउट, आपका जो शोल्डर वाला जो एरिया है, पीछे शोल्डर्स की जो बोन होती है, उस ब्लेड में अगर आपको पेन हो रहा है तो इट ऑल्सो शोज दैट कि समवेयर यू हैव अ प्रॉब्लम इन द रिब, यू मस्ट हैव अ रिब पेन. और कभी कभी हमारी बैक से पेन आके हमारे आगे रिब वाले एरिया तक आता है, तो दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव अ रिब पेन. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आपका बैक इशू नहीं है, कहीं ना कहीं आपके रिब्स में, आपके रिब्स के जो मसल्स रहते हैं, हमारी रिब्स ऐसे बोन्स में रहती हैं तो उसके बीच में कुछ मसल्स रहते हैं. कभी कभी जब रिब्स का काम क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो ये ऊपर जा रहे हैं, ये खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, मसल्स टाइटनेस प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको वो पेन रहता है. तो आई विल शो यू सम एक्सरसाइजेस जिससे आप इस पेन से गेट रिड ऑफ हो सकते हो एंड यू कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. Okay, so let's start with the first exercise. First, come in crawl position. Your hand and shoulder will be in straight line. Hip and knee will be in straight line. There will be 90-degree angle between shoulder and hand and hip and knee. So, firstly, you have to take this hand all the way in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. So the same thing you have to do for the second hand. Take it all the way in, breathe out, breathe in. Let's start with the second exercise. First you have to lie down straight on your back. Take your left knee towards right and you have to look opposite towards left side. So this hand will go like this. Breathe in, breathe out. So let's start with the third exercise. Again you have to come in quadruped position, crawl position. Your shoulder and hand should be straight at a 90-degree angle. Knee and hip should be straight at 90-degree angle. So, in normal position, you have to look straight. Breathe in when you are in normal. You are just like that. You have to breathe in. And when you are going down, you have to breathe out. So this exercise you have to do 10 times. Okay, so let's start with the fourth exercise. You have to stand straight, chest should be broadened, shoulders relaxed. You can take one towel instead of this. I'm taking this right now. Okay, so this will go straight up. First, extend your back. Take normal breathing. Then flex. Breathing should be continuous, it should not stop. Then left side. Again back to normal. Right side. Again back to normal and relax. So this you have to do 10 times. Okay, so let's start with the fifth exercise.
Take one towel or TheraBand, stretch it to the maximum, take all the way back, and now you have to take care that you have to rotate your hip, not your leg, not your shoulders. आपको अपनी hip को rotate करना है and अपने opposite hand वाली side देखना है. Then again come back to the normal. Again rotate your hip and look at your opposite hand. Come back to the normal, and you have to do this exercise 10 times for each side. So these all the exercises which you have to do. But I want to mention few things. अगर इन exercises को करते वक्त आपको कोई भी discomfort feel हो रहा है, आपको breathlessness feel हो रही है, आपको कोई burning feeling आ रही है like your left side of your chest, अगर आपको सांस फूल रही है, स्वेट आ रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो एट अ टाइम आप एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर दें. नो नीड टू कंटिन्यू दीज एक्सरसाइजेस. दैट्स ऑल आई वांट टू से. एंड वी आर लोकेटेड इन Banirghatta Road, Medix Hospital. Number is mentioned below if you want to contact us. And please like, share and subscribe our videos for more videos and for more topics just for your health purpose. Witness your fitness